Hello. Hello. Okay.
Hello, dear. Good morning. Good morning, ma'am. Another 5 minutes or so because the students are joining. Ma'am. Yeah. And then we'll start the session. Yeah. Okay. Yeah.
I hope I'm audible. Good morning, everyone. I'm Shweta Shahasne from the Department of Zoology. It is my privilege to be your host for today's session.
respected principal madams, vice principals, the head of the department, distinct faculty members, our distinguished alumni speaker, and dear students. A very warm welcome to all of you present here today. On behalf of the Department of Zoology, Shweta madam, sorry I'm interrupting you. Has it been made YouTube live before you continue? yes, ma'am. Is it already YouTube live currently? Is the session live? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay, continue. Yeah, thank you. So, on the behalf of the Department of Zoology, in collaboration with the IQAC, I feel honored to host today's insightful session titled Cracking Administrative Services. The session is especially meaningful as it connects our current students with the successful alumni who has carved a remarkable path in the civil service. I would now like to extend a warm and respectful welcome to our dignitaries, our respected IC Principal, Dr. Deepa Verma ma'am, our Honorable Vice Principal, Dr. Pradipta Pranswar ma'am, our distinct Head of the Department of Zoology and IQC Coordinator, Dr. Pini madam, Head of the Department of Zoology, Dr. Smita Pillai ma'am, our faculty members, dear participants who have joined us online in the Google Meet as well as on YouTube. We are truly grateful for your presence. It is now my immense pleasure to introduce our distinguished alumni and keynote speaker for today, Ms. Shipra Zambal, an inspiring achiever and a shining example of determination and perseverance. She is an alumni of our very own Viva College, having completed her BSc in Zoology batch in 2018 and 2019. From the classroom of this institution to the corridors of the administration, her journey reflects dedication, discipline, and a clear vision. She, she has successfully cleared the prestigious civil services examination and is proud officer of the IAS 2023 batch Bihar as an achievement that places her among the top administratives of this country. Her journey was not just about the academic excellence, but also about consistent hard work and smart strategy, strong time management, and self-discipline, the courage to overcome challenges and setbacks, and the passion to serve society. Today, she stands a role model for all the aspirants from the various backgrounds who aspire to enter the field of civil services. We are truly proud to have her back with us today as a speaker and guiding next generations. Before we begin the session, I would like to invite our respected principal madam to address the gathering and share her valuable thoughts to the audience. Thank you so much, Shweta ma'am. First of all, a very good morning, and it's my pleasure to see Shipra out here. She has been a wonderful student because I remember her journey in the institution. Somebody who was a very docile, a very calm, composed student all along the 3 years of her academics that I have seen here. So, Shipra, I really feel so honored and blessed myself to see you here because this is something that we look forward from our students. I take the opportunity to welcome you on behalf of Vishnu Vaman Thakur Charitable Trust. Honorable President Shri Hitendra Thakur always believes that Viva stands for education for all, and there is no barrier when it comes to extending support, extending cooperation, or being there for not only our students but even for the society. So I'm sure he feels the same for every single student who wishes to be part of Viva. And once the student passes out, the happiness is equal for him. There are the other members of the trust, Secretary Honorable Aparna Thakur Madam, and the treasurer Shishikar Thakur Sir, the youth or the young brigade of the trust. They also believe that the institution has to reach the
heights where it genuinely deserves to be there. And contribution from alumni always makes it possible for any institution to show what this institution is made of. The trust members, Sri Sanjeev Patil sir, Sri Sanjay Pingulkar sir, V.S. Patil sir, Fadde sir, as well as Kuti sir. Now everybody will feel, why am I taking names of all the trust members? Because Viva is Viva because of the inputs and the guidance and support of all these members behind the curtains from time to time. But they are not unknown to any of us, including you. So it really means a lot for me to mention their name over here, because it is their job, their role, that they have always extended support to each one of us. I also take the opportunity to welcome and say thanks to all the participants who are present in this Google Meet, as well as those who are participating via YouTube. So thank you so much to all of you. And Shipra, we all are looking forward to listen from you about the journey that you have had while you were studying for your administrative services. A wonderful welcome to you and the perseverance that you had, your family's support. Thank you so much, Shipra. Thank you, madam, for your encouraging words and constancy. Now, I would like to request our head of the department of zoology, Dr. Smita Pillai, ma'am, to say a few words. A very good morning to our principal ma'am, uh, our dear students, our faculty members, and our very, very, very proud alumni, Shipra Chaudhary. I welcome you on this forum, and like Madam said, Principal Ma'am said, it gives us immense pleasure and pride when our students make benchmark and become role models for other students and inspire other students. So I hope through this session of yours, you will inspire many more young minds, to stimulate many more young minds so that they can help in nation building, and they can achieve their target the way you have done it. So I wish all the best to you, Shipra. I hope this session brings up, enlightens many students, young aspirant, and hopefully many more students would turn up and clear this UPSC, MPSC exams, and serve the nation, and thereby even giving us a sense of pride and making the Viva college a benchmark for really good students, and have a very good legacy to take ahead. So, on that note, I would wish you all the best, and I guess we should start with our program. Ma'am, Principal Ma'am, with your due permission, can we start? Yes, please. We all are here for Shipra's guidance. So please begin. Yes, thank you. Thank you very much. All the best, Shipra. The stage is all yours. Thank you, ma'am. A very good morning to Principal ma'am, Vice Principal, all the faculty of Viva College, and all my colleagues who have joined in for the session. A very good morning to all of you. Um, I would want to know, however, Shweta, since you are presenting, I would want to know, is it a question answer session that we should proceed with, or I should go in flow first and then the question answer round will follow? Shipra, question Ma'am, and you, answer can be done later. We can go in the flow. And then we will have like 10 or 15 minutes at the end where we can have an question and answer round. Ma'am, okay. So, while starting my journey, I was actually in the third year of my college when I had full-fledgedly made my mind about this examination. Um, and I did not take a lot. What I did was very simple steps uh, towards it. Like first was to understand the examination.
Okay. Was to understand the examination of how many stages are there in the examination, or what is it that is required, or what is it that I would be required to do after selection. I think that is the first question that should be there. आजकल ऐसे होता है कि कई बार people start preparing for the examination and then you have 10 lakh 15 lakh people appearing for the examination, but there is no clear why of why they want to do it, or there is no clear motivation of why they want to do it. So they start in full stretch. उसके बाद में when the motivation feels low, उसके बाद में they somehow try to they get away with the preparation, or they find alternate, which is not a bad thing, but somehow if the motivation is very clear of why you want to do the examination, I think it will be seamless, the flow would be good for the examination. Even if there are a few stages that you might not get through, still you will have a clear vision of what you want to do and how do you want to perceive it. Once the why is clear, the how becomes clearer, and जो उसका रास्ता है वो बनता जाएगा. तो सबसे पहले, since so many students have joined in, I would request कि अगर आपको prepare करना है इस examination के लिए, तो सबसे जरूरी ये है कि आप जाने कि इस examination में क्या क्या requirements हैं, and whether do you want to actually give your entire service life for it. मतलब, are you ready to take up that as a challenge, not just the examination, but an entire life of those elements. So that is the first thing. उसके बाद में अगर हम preparation पे आते हैं, so understanding the exam in a manner that इसका जो examination का एक cycle है वो ही पूरा एक साल का cycle होता है. Prelims, the notification comes out in around February, March, and then you have prelims in around May or the first week of June. Mains hota hai in August, September, and interview hota hai by December to February next year. So you see that one, अगर आप एक ही attempt दे रहे हैं तो उसमें एक साल का ही पूरा समय लग जाता है. तो उस तीनों stages को समझना, उन तीनों stages की क्या requirement है वो समझना, I think initially वो काफी helpful होता है. उसी में ही काफी ज्यादा समय भी लग जाता है. You take around I think 2 to 3 weeks to just understand the exam, कि कितने stages हैं, किस stage में कितने papers होते हैं, कितने papers में आपके कितने marks होते हैं, कितने wordings चाहिए होते हैं, हर stage की अलग अलग requirement है, उसको समझने में ही कुछ नहीं तो 1 महीना आराम से 3 हफ्ते 1 महीना आपको लग जाता है. And it is a continuous process. So for people who have started preparing, I would say that आप बहुत सारे videos देखिए online, आप proper videos देखिए of how they started with their preparation, or what guidance they are giving. This examination, I believe, is not just about कि आपने syllabus देखा है उसके हिसाब से आपने तैयारी कर ली. It is a lot about guidance and learning about क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है. नहीं करनी है वो वाली चीजों पे काफी ज्यादा फोकस होना चाहिए, because you would not get 100 attempts, but there are people out there who have given a lot of attempts and they are telling about their experiences. तो जो भी जितने भी toppers हैं, आप उनके videos देखिए, and this is also how I started with my preparation. I started in my 3rd year. Around the 3rd year, I had made up my mind by 1st, 2nd year, लेकिन जो full-fledged preparation है, वो I remember by 5th या 6th sem मैंने start किया था. तो और the way I started was to look up online videos. 16-17 बैच के जो भी हमारे IAS टॉपर्स थे, अर्पिका शुक्ला मैम, टीना डाबू मैम, सभी के मैंने वीडियोस देखे थे. उनका जो भी डिटेल्ड बुक लिस्ट होता है उसको देखा था कि हर टॉपर ने कौन सा बनाया है. यूज्ड टू मेक नोट्स ऑफ इट कि ये है, इसमें प्रीलिम्स के लिए ऐसे बुक लिस्ट है, मेंस के लिए अलग है. इट कैन नॉट बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, उस हिसाब से चेंज होगा. तो my second suggestion would be to look up a lot of online videos, और काफी ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन. उसको देख करके अपना आप एक कस्टमाइजेशन बना सकते हैं of what will work better for you in your circumstances. तीसरा ये भी है कि people think that it is only about Indian administrative services या police services, foreign services या forest services. There are total of 21 to 22 services that UPSC offers. जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें 21 to 22 सर्विसेज का आता है, जिसमें आपको प्रायोरिटी वाइज भरना है.
And I would also suggest that कई बार people very blindly fill IAS टॉप पे या फिर IPS टॉप पे भर देते हैं और बाकी सर्विसेज को फिर नीचे डालते हैं. बट वी सी दैट अभी बहुत ज्यादा इसमें अवेकनिंग भी आ रही है कि अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, अगर आपको लगता है कि फील्ड जॉब इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, तो फिर आप IAS IPS को चूज करें. इफ यू थिंक दैट यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इनकम टैक्सेस या ऐसे आप कॉमर्स के हैं या फिर दूसरे स्ट्रीम से हैं, आप उससे उस तरफ इंक्लाइंड हैं, तो आप उस हिसाब से अपने प्रायोरिटीज भरिएगा. अभी पिछले 1-2 साल में ये भी हुआ है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन योर सर्विसेज, यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट एट द स्टेज ऑफ फिलिंग योर प्रीलिम्स फॉर्म इटसेल्फ, और फिर वो एडिटेबल नहीं होता है. This was not there during my when I was giving my exam, but this is what has changed. So look into the services. जैसे नोटिफिकेशन आता है और सर्विसेज का प्रेफरेंसेस आपसे मांगा जाता है, look into the profile of all those 21-22 services. Look into what would suit you better, and then accordingly take a step कि आपको किसको prioritize करना है. Don't just follow the herd mentality कि अगर सभी लोगों ने वही डाला हुआ है तो उसी के हिसाब से हम फिल करेंगे. लुक इनटू, जैसे मैंने बताया कि काफी सारे टॉपर वीडियोस भी हैं और वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल, चाहे वो यूट्यूब पे हो या टेलीग्राम पे हो. एवरीबडी जॉइन्स टेलीग्राम दीस डेज. देयर आर अ लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स जो काफी सारा मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. आप देखिए कि हर पेपर कितने मार्क्स का आता है, उसमें कितने वर्डिंग्स की आवश्यकता होती है, वो सब कुछ आप नोट डाउन कीजिए. प्रिपेयर अ मेंटल डायरी ऑल्सो ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज द लीस्ट कंसर्निंग thing that you will be bothered by when you move into serious preparation. लेकिन starting में when you are required to do it, make मतलब आप उसको इतनी बार उसको देखिए या इतने ज्यादा आप immerse हो जाइए उस process में that it makes a mental note of it. Now, how do you start preparing? Now, this is where if you have made your mind कि this is what you want to do, and this is what you are inclined towards as well, you have your interest, एंड ऑब्जेक्टिवली भी आप अपने सर्कमस्टांसेस समझ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. आफ्टर यू हैव मेड योर माइंड, हाउ डू यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? तो सब ये वंस यू हैव मेड योर माइंड, जस्ट डाइव इनटू द प्रोसेस. आपने मेंटल नोट बना लिया है ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो भी आपने वीडियोस में देखा होगा या जो भी आपने ऑनलाइन पढ़ा होगा, जाना होगा इस प्रिपरेशन के बारे में. आप स्टार्ट कीजिए बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स. सिंपल है. There are 2 newspapers which are generally recommended. I would also recommend the same, The Hindu, or you can read the Indian Express. Both newspapers are good enough to give you जो भी करंट अफेयर्स में जो भी हो रहा है, तीन दुनिया में जो भी हो रहा है, वेदर मतलब देश में हो रहा है या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स है या फिर कोई भी ऐसी न्यूज होनी चाहिए, न्यूज आइटम होना चाहिए विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर अ सिटीजन हु इज वेल अवेयर. ऐसा कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं है, बट somebody who should know as a citizen, as an Indian citizen, जो भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो भी आपको पता होना चाहिए कि आसपास में क्या हो रहा है, वेदर इट इज लोकल न्यूज या फिर स्टेट में क्या हो रहा है आपके, या फिर देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आई थिंक यू कैन रीड एनी वन ऑफ द टू, which is the Hindu or the Indian Express, and you can make online notes या फिर offline, जैसे भी आपको ठीक लगे, make notes of it. And simultaneously, along with reading newspapers, start with NCERTs of 6th to 12th. So you see, you're going back to your basics. 6th to 12th की आप NCERTs पढ़ना start कीजिए, चाहे वो पॉलिटी की हो गई. I remember I started with class 11th. There's a very good book जिससे prelims से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते भी हैं. पीपल रीड अलॉट कि वो बल्कि बुक्स पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत और बहुत ज्यादा बल्कि बुक्स पढ़ते हैं, बट यू स्टार्ट विथ द बेसिक्स. क्लास 11 की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटी की. तो यू स्टार्ट विथ जितना बेसिक हो सकता है. आपको लग सकता है कि ये तो हमको पता है, ये तो स्कूल में पढ़ा था, ये तो बहुत ही बेसिक है, बट आप उसी से कीजिए. It should not take you more than 2.5 months to complete all of those NCERTs. And if you're preparing, of course, alongside your graduation, so it should not take you 3 hours. It should not take you more than 3 months. I'm sorry. It should not take you more than 3 months to complete your NCERTs. चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या जो भी हमारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सभी के आप NCERTs कर लीजिए.
simultaneously go with newspaper reading. So that should suffice with the initial preparation. And try and make a timetable. आप टाइम टेबल बना सकते हैं इनिशियल स्टेज में कि आज जो है 2 से 2.5 घंटे न्यूज़पेपर का रीडिंग होगा. न्यूज़पेपर रीडिंग will not be something that you skirt through the newspaper, you look at the headline and you're done away with it. No, you will have to read it as if you're reading the Bible. मतलब you will have to mark, आपको एकदम पेन से उसको मार्क करना पड़ेगा. There will be a lot of things that you will not understand initially since you're just building your basics with NCERTs. So there will be a lot of things. It will take a lot of time क्योंकि आप देख रहे हैं, आप उसको मार्क कर रहे हैं. You are searching also कि ये चीज क्या होती है, 10th schedule क्या होता है, ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीजें आप सर्च भी कर रहे हैं, तो it will easily take you initially 2.5 to 3 hours. तो जब आप टाइम टेबल बनाए, give ample amount of time to the newspaper. You might feel that it is not translating enough into answering mains के questions या prelims के questions when you're sitting down to solve PYQs, but it will help a lot. One submission that I would make is that even though I started my preparation, full-fledged preparation in 3rd year, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग वाला जो हैबिट था मैंने 2nd year से लगा लिया था. मतलब 1 साल पहले से न्यूज़पेपर was not something that I just skirted through या वैसे. I sat down and जैसे UPSC requires you to sit down with the newspaper for 3 hours and making notes of it, मैंने वो पहले किया था. So if there's one thing that you would want to do, it is anyway you should be reading the newspaper every day, even if you're not preparing for the examination. But when you're reading, there is a different process to do it. तो मैं बोलूंगी कि वो 2.5-3 घंटे दे करके आप न्यूज़पेपर जरूर बहुत अच्छे से दीजिए. And I'm emphasizing and reiterating it enough because it is quite important. टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप आराम से 2.5 से 3 घंटा न्यूज़पेपर को दीजिएगा. एनसीईआरटीज का रीडिंग है, आप एक साथ में कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, 1 सब्जेक्ट ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, व्हाटएवर सूट्स यू बेटर. तो 2.5 से 3 घंटा वो लगा लीजिए. 5 से 6 घंटे का इनिशियली कीजिए. हमेशा नहीं होगा कि अगर आप 5 से 6 घंटे का आपने स्केड्यूल बनाया है तो यू विल बी एबल टू फॉलो इट, बट नहीं होगा. इवन इफ इट इज बॉइलिंग डाउन टू 3 hours 2 hours, ठीक है, इट इज गुड इनफ फॉर प्रोग्रेस कि आप ग्रेजुएशन में जितना दे रहे हैं वो काफी अच्छा टाइम है. एंड मेक इट अ परसिस्टेंट हैबिट कि आप 3 से 4 घंटे ग्रेजुएशन में यू गेट हैबिचुएटेड टू कि आप उतने में ही आप 3 से 4 घंटे कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं. इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर इट विल बी वेरी फ्लोई, मतलब इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू डू दैट. And in the initial stage itself, I would say newspaper, NCERTs, timetable, and 4th है कि आप अपना optional decide कर सकते हैं. मतलब you may, as you might know, prelims has 2 papers, GS and CSAT. GS is general studies, जो भी हमारा history, polity सब कुछ हम पढ़ते हैं, which is the deciding factor, वो GS में आता है. It is of 200 marks, ठीक है. There are 100 questions. CSAT is paper 2, which immediately follows GS on the prelims day, and उसमें aptitude, maths, reasoning, कुछ English के questions वो होते हैं. It should not be an issue. वो बहुत qualifying होता है, 200 marks का होता है, उसमें से 67 marks आपको लेके आने होते हैं. तो it is just a qualifying paper. Don't give a lot of effort into it. However, in the recent years, we have also seen that people have started failing in CSAT. And this is because CSAT का उन्होंने standard बढ़ा दिया है. तो UPSC does this that when there is a lot of competition, what it does is कि GS तो उसी trend पे रखेंगे, CSAT को tough बना देते हैं. तो अपना आप देख लीजिए PYQs के हिसाब से where you stand and accordingly prepare for it. Mains में this is for prelims. Mains में we have essay which comprises आपको 2 essays लिखने होते हैं in 3 hours, section A and section B. You have 4 main GS papers. This is what you are actually preparing for. GS paper 1, 2, 3, 4, and you have your optional. तो optional subject होता है which carries the bulk of the paper. मतलब 2025 marks का पूरा UPSC होता है, mains and interview मिला करके, उसमें से 500 marks आपके optional के होते हैं. So I'm sure you must have made a note of it कि prelims, mains का क्या stage होता है, क्या होता है. ऑप्शनल पे इसलिए बोल रही थी कि जब आपने इतना स्टार्ट किया है न्यूज़पेपर के साथ में और एनसीईआरटीज के साथ में, सेट अप अ टाइम टेबल, गिव सम टाइम टू योर ऑप्शनल कि आपको क्या ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, ठीक है.
and it should be a well thought of decision. Matlab, it will take time to just decide your optional also. That could also be done. यहाँ पे I would share a personal experience. I started with one subject in my graduation, which was a technical subject. It was one of the subjects जो मेरे graduation में रहे थे, and I started preparing for it. मैंने books भी मंगवा ली थी, because I used to get good marks, decent marks in it, and मुझे I used to feel confident also. But as soon as I started preparing, I prepared for it for about 6 months. और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस प्रिपरेशन में ही, अगर ऑप्शनल के ही इसमें इतना चली जाऊंगी टेक्निकल में, मैं जीएस कवर ही नहीं कर पाऊंगी. तो midway 6 months into the preparation, luckily I was in my graduation at that point of time, तो I could backtrack also, तो कोई इशू नहीं हुआ. लेकिन ऑप्शनल के लिए when you're deciding your optional, you have to be very practical कि आप उतना टाइम दे सकते हैं उस ऑप्शनल को या नहीं. तो गिव 2 to 3 months, 4 months, थिंक अबाउट इट. सारे ऑप्शनल के सिलेबस देखो जो भी आपको लग रहा है. अगर आप आई एम बिलीविंग दैट जूलॉजी एंड लाइट कोर्सेज से सभी लोग जुड़े हुए होंगे, तो आप जूलॉजी का सिलेबस देखिए क्या है. जूलॉजी इज देयर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. देयर इज बॉटनी आल्सो, देयर इज केमिस्ट्री आल्सो, फिजिक्स भी होता है, मैथ्स भी होता है. ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं. आप सिलेबस देखिए, एंड देयर आर अदर जीएस अलाइड ऑप्शनल्स आल्सो, like you have history, polity, and there are certain trending optionals, one of which even I took for my examination. And if there's a submission, I scored the highest in that particular optional subject, and it is because of my optional that I could also get into the list. So I hope you understand the gravity of the situation, कि कितना important होता है optional को choose करना, to stick by it and to take a call. मतलब even if it is taking some amount of time to decide your optional, take that decision बहुत आराम से. इफ यू फील ग्रेजुएशन में ही आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, जीएस वाला हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी जाएगा, आप चेंज कर दीजिए, चेंज कीजिए. बट एट दैट टाइम थिंक कि दूसरा जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसमें आपको कोचिंग मटेरियल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इजीली, या फिर आप उसमें 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहेंगे रोज या नहीं पढ़ना चाहेंगे. मतलब वो इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है. अगर इंटरेस्ट नहीं है जीएस में, इट्स फाइन, इट्स समथिंग दैट इज कंपल्सरी, इट इज समथिंग दैट इज बिस्टाउड अपॉन कि आपको ये करना ही है, देयर इज नो अदर वे आउट. लेकिन ऑप्शनल इज इन योर हैंड्स. इफ यू नो दैट यू आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स रीडिंग इट फॉर 8 hours 6 hours, तो यू कांट चूज समथिंग दैट यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन. तो वो काफी एक अच्छा प्रैक्टिकल बैलेंस होना चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, एंड सेकंड इज वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन इट और नॉट. तो इनिशियली मेरे हिसाब से ये 3-4 चीजें होनी चाहिए. एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए, ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज यू कैन, ठीक है. और चौथा है सिलेक्टिंग योर ऑप्शन, ठीक है. आप सिलेक्ट कर लीजिए, इवन इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग विद इट, सिलेक्ट एन ऑप्शनल, लुक इनटू द सिलेबस ऑफ ऑल द ऑप्शनल्स व्हिच आर देयर. In very brief, I will discuss my sources also. I have written them down. मैं शेयर भी कर दूंगी क्योंकि काफी ज्यादा, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दूंगी अभी जैसा है जीएस के लिए. एंड माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी हैज अ गुड मिक्स ऑफ सोसाइटी एंड बायोलॉजी, दोनों चीजें उसमें होती हैं. तो इसी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज इट, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी. I had a backing of it in my graduation, and GS वाला जो पार्ट था वो मुझे एनी विच वे कवर करना ही था अपने प्रिपरेशन टाइम पे. और उसका सिलेबस ज्यादा भी नहीं है, इट इज अ मीडियम साइज्ड. बाकी सब ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है जैसे हिस्ट्री में होता है या पॉलिटी में होता है. इट इज अ गुड बैलेंस. अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आई वुड श्योरली रिकमेंड इट. दूसरा जो ऑप्शन यूजुअली लोग बोलते हैं या चूज करते हैं, अगर उनको अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट नहीं चूज करना होता तो वो सोशियोलॉजी लेते हैं. तो इफ दैट इज आल्सो, मतलब उसका भी सिलेबस पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही यूजुअली डिस्कस किया जाता है, तो उसका भी सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है. तो एंथ्रो एंड सोशियो इज एंथ्रो, इफ यू हैव बायोलॉजी एज योर बैकग्राउंड कहीं पे भी, तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन सिलेक्ट. हाउएवर दिस सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज completely personal. मतलब it is on the basis of what you are inclined towards. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद में भी रियलाइज कि probably we
मतलब it is a very practical thought that I'm giving, that probably we never liked the subject. Okay, this happens with a lot of people. If that is the case, कोई जरूरत नहीं है आप कोई दूसरा ऑप्शनल चूज कर लीजिए जो बिल्कुल अनरिलेटेड है. देयर इज नो फाउंडेशन बाय यूपीएससी की जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट में या उसी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको चूज करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. I will just cut through my GS sources. I'll also share a PDF sources का and book list का of my GS. Modern Indian history के लिए 11th and 12th क्लास की NCERTs and there is a book, इतनी मोटी किताब है, Spectrum. It is the best book for history. Once you are done with the basic modern Indian history, 11th and 12th की आपने NCERT कर ली है, उसके बाद में you need not even go back to it. You may just revise that Spectrum. चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, प्रीलिम्स में इनफैक्ट हर चैप्टर के बाद में उसमें समरी दिया हुआ है. अगर चैप्टर है कुछ 40-50 पेजेस का तो वो 2 पेजेस में उसका समरी भी देता है. You may add it there also. You may have stick notes or something. So Spectrum is the best book that you can have for modern Indian history. Medieval and ancient history के लिए you have NCERTs. इस पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स में medieval and ancient में however I would say that NCERTs बहुत बल्कि हैं और जो उसका वेटेज है एग्जामिनेशन में वो उतना ज्यादा नहीं है. तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक है, काफी संक्षिप्त में काफी ब्रीफ में वो सारे इवेंट्स को दैट हैव हैपेंड फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल कवर कर दिए. बहुत ल्यूसिड है, बहुत ब्रीफ में है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बेस्ट है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू गो विद द फुल वर्जन दैट यू वांट टू प्रिपेयर मतलब फुल फ्लेजेड एंशिएंट एंड मिडिवल में भी यू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, 11th and 12th क्लास की एनसीईआरटी कर सकते हैं. पॉलिटी के लिए एज आई टोल्ड यू देयर इज क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मस्ट रीड है. इवन इफ यू थिंक दैट मैंने बहुत बार पॉलिटी मैंने बहुत ध्यान दिया था स्कूल में, लेकिन उस बुक को जरूर पढ़िएगा. एंड देन मूव ऑन टू इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत. So that book is also sufficient. Prelims and mains के लिए, mains के कुछ topics एम लक्ष्मीकांत में छूट जाते हैं, लेकिन वो आप कवर कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेज से, वो हो जाएगा. एंड वंस यू आर डन विद द एंटायर इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक, उतना डिफिकल्ट भी नहीं रह जाता है वो बाकी छूटे हुए टॉपिक्स को कवर करना. सो दैट शुड सफिस. इकोनॉमी के लिए देयर इज दिस येलो बुक जो आती है. येलो बुक इज अ कोचिंग मटेरियल बुक, ठीक है. तो आप उसको टेलीग्राम पे बहुत इजीली वो अवेलेबल होता है, वो कर सकते हैं. या इकोनॉमी के लिए मृणाल के वीडियोस आते हैं जो काफी फेमस है, तो मृणाल के वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, वो सभी फ्री हैं. आप उससे नोट्स बना लीजिए. और इकोनॉमी में अलग से कोई प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है, जो भी आसपास में हो रहा है सप्लाई डिमांड उसी के हिसाब से उसके क्वेश्चंस आते हैं. वो इजीली सॉल्वेबल भी होते हैं. कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए या कुछ जो थ्योरीज होंगी जो इफ यू आर नॉट एन इकोनॉमिक ग्रेजुएट आपको जानने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो उसके लिए मृणाल के वीडियोस शुड सफाइस. इफ यू वांट हैंडी नोट्स तो येलो बुक आप ले सकते हैं. इट इज इजीली अवेलेबल. अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे बहुत इजीली आपको टेलीग्राम पे या फिर आप किसी कुरियर वाले से भी मंगवा सकते हैं. ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आर द होल सोल दैट यू हैव. 6th to 12th की एनसीईआरटीज, जिसमें से 11th and 12th की तो मेन है. बहुत मतलब सारे सब्जेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरीज, सभी कुछ वो 11th and 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर ज्योग्राफी, नथिंग एल्स. मतलब अगर कुछ टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो एक और बुक है जीसी लियो, उसको कवर टू कवर आपको नहीं देखना है. It's not needed. You might do it if you want to, but it's not needed. What you can do is certain topics, if you feel that repeated है prelims में या mains में, that you may refer to GC Neo. Otherwise, 11th and 12th class की NCERT for geography is all that you have to do. ठीक है. और वैसे अगर पूरा कवर करना है, which is the best option, 6 to 12 की NCERT. International relations के लिए you have to rely on newspaper. जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, आसपास में जो भी हो रहा है. एंड इन once you start reading the newspaper, कुछ टाइम में you will find connections of different countries की ये alliances हैं, ये हमारी कंट्री के साथ में. फिर हमारा इंडियन इंटरेस्ट क्या है उसमें, हमारी इंडियन डायस्पोरा के लिए क्या बेटर है, उस वे में आप सोचने लग जाओगे. सो न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. वो पूरा एक वेब बना देता है इन योर माइंड कि
क्या चल रहा है इंटरनेशनली एंड व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स का मटेरियल जो होता है, आई कम टू दैट, करंट अफेयर्स आल्सो पूरा मैं बोलूंगी तो करंट अफेयर्स आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अगेन इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक एंड एनवायरमेंट का अब काफी सारा जो वेटेज है वो बढ़ गया है प्रीलिम्स में, बिकॉज इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज और बाकी जो सर्विसेज हमारे यूपीएससी सीएससी के थ्रू होता है, दोनों का कॉमन प्रीलिम्स होता है। तो कॉमन प्रीलिम्स होने की वजह से एनवायरमेंट का जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो इवन दो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, तो इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब आप उसको कवर कर लेंगे अगर अच्छे से, है ना, करंट अफेयर्स अच्छे से देख लेते हैं और कोई एक सॉलिड बेस बना लेते हैं, तो एनवायरमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो एनवायरमेंट के लिए एक शंकर आईएएस की बुक आती है जो यूजुअली लोग बोलते हैं, अगर वो आपको थोड़ी आउटडेटेड लगे, हालांकि पीपल कवर देयर कंसेप्ट्स फ्रॉम दैट, शंकर आईएएस और विजन आईएएस, either of the two you can take up, उसमें आप concepts build कर सकते हैं and then you can go on with your current affairs. Science and tech is again PYQ and current affairs based. Society, now there are 2 to 3 topics जो बहुत छोटे छोटे topics हैं और उसको आप current affairs से clear कर सकते हैं, जैसे society हो गया, governance, disaster management, internal security, ये सारे मेंस पेपर 3 में आते हैं। तो सोसाइटी और गवर्नेंस को छोड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दीज 4 टॉपिक्स आर नॉट दैट बल्कि एंड यू कैन इजीली डू इट विद करंट अफेयर्स। और एनी विच वे जैसे आप देख भी रहे हैं टॉपिक्स जो हैं, सोसाइटी हो गया या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इट इज मोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, इट कैन बी कवर्ड थ्रू द करंट अफेयर्स। एंड लास्टली वी हैव एथिक्स। Ethics is gaining momentum in the last few years and rightly so. Ethics का preparation कैसे करना है, आप कोई एक material ले लीजिए जो आ रहा है, in fact even if you have not started with your preparation, just to build your interest in ethics, just look up the previous year questions जो आते हैं ethics में, and the first thing that मतलब that will intrigue you is जो केस स्टडीज आते हैं, तो वो केस स्टडीज आप खुद से सॉल्व करके देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर प्रिपरेशन। जो केस स्टडीज है, इफ यू हैव अ गुड कॉन्शियंस तो फिर एथिक्स विल नॉट बी अ मेजर इशू, क्योंकि केस स्टडी अगर कुछ इशू होगा तो वो टेक्निकल चीज में होगा कि आपको केस स्टडीज का राइटिंग आपको उतने वर्ड्स में कंप्लीट करना है उतने टाइम में, और एथिक्स का ही पेपर है जो मोस्टली लोगों से छूटता है, तो that can be an issue. But अगर आप PYQ देखेंगे and even if you have not started with the preparation, आप सिर्फ केस स्टडीज के क्वेश्चंस देखिए एंड आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे वो आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो एथिक्स की प्रिपरेशन या फिर एटलीस्ट उसमें जो इंटरेस्ट है वो वैसे बिल्ड होगा। बाकी जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं वो थियोरी के होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए PYQs देखिए, उसके बाद में कुछ साइट्स हैं, तत्व इंडिया या बेटर इंडिया, है ना, ऐसे कुछ साइट्स आते हैं, उनपे कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं, उसको आप साइट कर सकते हैं एज एग्जांपल्स, या केस स्टडीज आप साइट कर सकते हैं। थ्योरी है उसका प्रिपरेशन करना है, वो मेनली सिलेबस से आप वर्ड टू वर्ड इंटरनेट पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए। अगर कुछ चीजें नहीं पता है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ऐसी मतलब ऐसी अगर थ्योरी में अगर आपको चीजें जाननी है तो आप यू कैन सर्च इट ऑनलाइन। एथिक्स का प्रिपरेशन कैन बी डन ऑनलाइन, वर्ड टू वर्ड आप बस ढूंढिए, उसके आप ऑनलाइन नोट्स या फिर ऑफलाइन नोट्स बनाइए, 40-50 पेजेस के नोट्स, बहुत कंसाइज नोट्स बनाइए। बाकी केस स्टडीज की प्रिपरेशन कोई नहीं करा सकता है, रिटन में ये हो सकता है कि आपको उतना टाइम दिया जाएगा और उतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, वो एक टास्क हो सकता है, बट कैसे सोचना है या क्या करना है वो उसका कोई प्रिपरेशन नहीं है। इफ एट ऑल इट इज पीयर रिव्यू, मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर 4 लोग हैं और चारों लोगों ने उस केस स्टडी में अलग आंसर दिया होगा, तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज लिखी हुई थी और यू नो योर फ्रेंड और योर कलीग हैज आंसर्ड द सेम क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, दैट इज अ गुड मेथड अगर आपको प्रैक्टिस करना है केस स्टडीज के लिए। CSAT I have already discussed. CSAT में it should not require a lot of preparation. Look through previous year question papers. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि if you have not practiced maths और reasoning बहुत टाइम से नहीं हुआ है,
उसमें आपको यू डू नॉट इवन हैव टू शाई अवे। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसमें कोई कोर्स लेना चाहिए, ले लीजिए, है ना। कोई, क्योंकि बहुत लोग अब 2-3 सालों से, इवन आई हैव कम इन कॉन्टेक्ट विद पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन ऑल्सो, और फिर जब वो सर्विस अपग्रेडेशन के लिए जाए हैं, सीसैट में फेल हो जाते हैं, जीएस में दे आर स्कोरिंग क्वाइट गुड, एंड दिस इज बिकॉज, नॉट बिकॉज देयर एप्टीट्यूड इज गॉन, बट बिकॉज यूपीएससी ने अपना जो सीसैट वाला है उसको यूज किया है, उस ट्रिक को यूज किया है टू कंपटीशन छाटने के लिए। तो सीसैट का अगर आपको लगता है प्रिपरेशन कर लीजिए। एक बुक मैं बता दूंगी, इफ यू हैव टू स्टार्ट, इट इज आर.एस. अग्रवाल, इट इज यूजुअली रिकमेंडेड, तो वो एक बुक है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, नाउ करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई टोल्ड यू, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको स्टार्ट करना है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, मेक नोट्स ऑफ इट। उसके अलावा सप्लीमेंट्री आप कोई एक वेबसाइट ले लीजिए, विजन आईएएस की हो गई, या फिर इनसाइट्स इंडिया की वेबसाइट मैं यूज करती थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनसाइट इंडिया पे रोज आपको जो भी दिन में हुआ है उसमें 10 से 15 कुछ न्यूज आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रीड थ्रू इट, एंड देयर आर 5 पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस जो उसमें होता है। 5 पीवाईक्यू 5 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स फॉर्मेट में, जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो उस दिन का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपका हो गया। तो इनसाइट्स इंडिया या कोई भी एक आपने ऐसी वेबसाइट चूज कर ली जिसमें आप उस दिन में जो भी हुआ है वो कंसाइज या ब्रीफ फॉर्म में देख लेते हैं। दूसरा एक आता है टेरिस पीटी 365, मेंस 365 एंड मंथली मैगजीन। ये आप कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। यूजुअली विजन आईएएस की लेते हैं। मंथली मैगजीन कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपका प्राइमरी सोर्स होना भी चाहिए। कई बार लोग वो नहीं करते हैं और फिर पीटी 365 पे जंप करते हैं। अगर नहीं हुआ है लास्ट मोमेंट तक, सारे मंथ के मैगजीन्स नहीं हुए हैं तो ठीक है, लेकिन पीटी 365 में फिर रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेक इट अ हैबिट कि आप मंथ बाय मंथ उसको कवर करते जाएं, दिक्कत नहीं होगा। पीटी 365 एंड मेंस 365 करंट अफेयर्स के लिए दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। नाउ कमिंग टू डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन करना है। लाइक आई टोल्ड यू, देयर आर 2 पेपर्स, जीएस एंड सीसैट। जीएस इज ऑफ 200 मार्क्स, सीसैट ऑफ 200 मार्क्स। उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। देयर आर 100 क्वेश्चंस इन जीएस। सीसैट में देयर आर 80 क्वेश्चंस और उसमें भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको हालांकि जब आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्सेज या बुक लिस्ट मैंने अभी बताई है उसमें बुक पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होगा। ये नहीं होगा कि ये प्रीलिम्स के लिए है, ये मेंस के लिए, वो साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होता है। बट देन व्हेन यू सिट डाउन 3 months बिफोर प्रीलिम्स, इट इज डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मतलब आप मेंस के टॉपिक्स को देखते नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन उस केस में कैसे करना है। स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज, स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी ने पिछले 10 साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, उसका पूरा आप एक ट्रेंड समझ लीजिए कि पॉलिटी से ये क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से ये क्वेश्चंस आते हैं, एक ट्रेंड है यूपीएससी क्वेश्चंस का। कई बार जो 2022 के पेपर में अगर आया हुआ है कोई क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट ऑप्शन ए, सी एंड डी क्या है, मतलब वो भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार वो इग्नोर हो जाता है। When you're sitting down with previous year questions, it is not just about कि क्या questions आए हैं, but बाकी options भी क्या है। मतलब the UPSC, मतलब UPSC is interested in that particular arena। उस level का या फिर उस depth में आपको एक बार study कर लेना है, which should not take a lot of time। तो previous year questions for dedicated prelims preparation। दूसरा है रिविजन, जो भी आपका बुक लिस्ट था, जो भी आपने सोर्सेज दिए हैं, यू स्टिक बाय इट। कई बार प्रीलिम्स के टाइम पे आपको एक फोमो हो जाता है, विच यू फील दैट इस सब्जेक्ट के लिए हमने ये सोर्स यूज किया है और जो हमारे कलीग्स हैं वो दूसरे सोर्स यूज कर रहे हैं, दैट सोर्स इज बेटर। तो वो अपना सोर्सेज एंड बुक लिस्ट आप स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि ये टॉपर्स में अगर ये बुक लिस्ट दिया हुआ है तो वो कामगार है, तो
उसी के बेसिस पे फिर आप स्टिक कीजिए और उसी का रिविजन कीजिए। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन 3 महीने बिफोर प्रीलिम्स, डोंट चेंज योर सोर्सेज, डोंट चेंज योर बुक लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। मतलब वंस यू हैव सेट योर स्टैंडर्ड, फिर आप वही कीजिए। उसका रिवाइज करना है और है उसमें टेस्ट सीरीज लगाना है, चाहे फिर वो विजन का लगा लें या कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। 2-3 का मैं नाम ले लेती हूँ जो अच्छे हैं मार्केट में। मैंने पर्सनली विजन, इनसाइट्स और फोरम, ये 3 के टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे। तो उनका क्या है, उनका शेड्यूल होता है कि वो जून से स्टार्ट करते हैं और वो अप्रैल मई तक उनका हर महीने या हर 15 दिन में टेस्ट होता है। वैसे आप कर सकते हैं। और एक और चीज जो I have gotten a question, I will note it down as well and I will answer during Q&A. ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के दौरान आप क्या कीजिए कि आप वो अगर हर 15 दिन में या 1 महीने में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में लेकिन 2-3 महीने में आपको टेस्ट सीरीज ही देते रहना है, तो आप सभी इकट्ठा ले लीजिए तब, और रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर टाइम इट, कि आपको 2 घंटे में खत्म करना है, और वो नंबर ऑफ आवर्स पे उतना ज्यादा उसमें असर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है कि 1-2 क्वेश्चन आपको लग सकता है कि आप उतना अच्छे से नहीं सोच पाए, बट टाइम फैक्टर ऐसे उतना इशू, मेजर इशू नहीं होता है प्रीलिम्स में जीएस के। इशू आता है ऑफ हाउ यू आर एनालाइजिंग इट। तो टेस्ट सीरीज आप अपना एक सेट कीजिए कि रोज सुबह मुझे ये 2 से 3 घंटे ये सॉल्व करना है, टाइम का इशू ना देते हुए अच्छे से सोचिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद में 3 से 4 घंटे आप एनालिसिस के लिए दीजिए कि अगर, और वो एनालिसिस बहुत मेंटल एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब नॉट जस्ट कि अच्छा इसका हमको ये नहीं पता था, बिकॉज एज यू माइट नो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बाकी जो स्टेट पीसीएस या बाकी अन्य जो भी पेपर्स होते हैं उसमें यू कैन प्रिपेयर कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर होना चाहिए उस चीज को, मतलब थोड़ा फिक्स्ड होता है कि क्वेश्चन ये है, आंसर ये होना चाहिए। यूपीएससी डज नॉट आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस जिसमें आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाएंगे कि कैसे ही क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर वही होगा, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो बहुत ज्यादा डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और आंसर्स भी ऐसे होते हैं दैट यू हैव टू चूज फ्रॉम, यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ एलिमिनेशन, गेस वर्क भी आपको करना पड़ेगा, विच इज नॉट मतलब वो तुक्का नहीं होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कैसे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉलेज दैट यू हैव, आप कैसे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं एंड यू अराइव एट द राइट क्वेश्चन, इट इज डन इन दैट मैनर। तो उस लेवल का जब आपका वो हो जाता है, वंस यू हैव सॉल्व द पेपर, उस लेवल का आपको एनालिसिस करना है कि यहाँ पे मुझे कुछ पता था, उसके बेसिस पे मैंने मार्क किया है, या फिर आई जस्ट हैड एन इंट्यूशन। यू विल हैव टू मतलब सॉर्ट इट डाउन टू दैट लेवल, एंड फिर आप एक रजिस्टर बनाइए कि किस किस में मेरे इतने राइट हुए हैं, इतने रॉन्ग हुए हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फाइनल मार्क्स। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा जा रही है उसमें भी आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम अटेम्प्टिंग, आई विल हैव टू नैरो इट डाउन। अगर 95 क्वेश्चंस है और उसमें से मेरे 60 ही रॉन्ग हो जा रहे हैं तो फिर दैट विल मेक नो सेंस। तो फिर यू विल हैव टू बी कैलकुलेटिव अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर अटेम्प्टिंग एंड ट्राई टू मेक एज मेनी राइट एज पॉसिबल। मतलब उस एक पर्टिकुलर बैलेंस पे आ जाइए। बहुत लोगों के लिए वो बैलेंस आता है बिटवीन 85 to 90, 85 to 90 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो बैलेंस आ जाता है। मेरे लिए पर्सनली 85 क्वेश्चंस का होता था कि 85 अगर कर रहे हैं तो 55-60 ठीक हो जाते थे, 25 से 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो सेटल इट डाउन एंड दैट बैलेंस इज डिफरेंट, अगेन लाइक आई से इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब देयर आर पीपल हु सॉल्व मोर देन 90 क्वेश्चंस और उनके बहुत सारे सही भी आ जाते हैं, तो दे हैव क्वाइट अ फ्री हैंड। आई वाज नॉट वन ऑफ दोस, आई हैड टू कीप दिस बैलेंस कि मुझे उतने ही क्वेश्चंस करने हैं, नहीं तो फिर मेरे ज्यादा रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसके अनुसार आप एनालिसिस कीजिए टेस्ट सीरीज में, एंड आप कुछ 50-60 टेस्ट सीरीज कर लेंगे, मतलब लगभग कुछ 2 महीने का अगर अब हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड हाउ डू यू गेट टू मैक्सिमम राइट मिनिमम रॉन्ग क्वेश्चंस। एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज, फिलिंग ऑफ ओएमआर, दिस शुड नॉट बी एन इशू, लेकिन यही है कि आप जैसे 25 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं
तो वो भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप अगर आप श्योर हैं उस चीज के बारे में तो OMR फिलिंग आप कर दीजिए, डोंट वेट अप टिल द लास्ट मोमेंट। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने टेस्ट सीरीज में देखा है कि आपको टाइम का इशू कभी नहीं होता है, तो वेट, सी टोटल आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से आप कितने कॉन्फिडेंट है उसको छाट लीजिए, फिर आखिरी 10 मिनट में अच्छे से टाइम देते हुए अपना OMR फिल कीजिए। उसके बाद में एग्जाम डे से पहले एक दिन you will be in anxious mood, तो don't let a lot of information get to you, मतलब इतना ज्यादा रिवीजन भी नहीं करना है कि अपने आप को ओवरबर्डन कर दिया है। And don't be anxious. I will share my personal experience here. In my second attempt, in my first attempt, I had missed my cutoff, जो मेरे कैटेगरी में पड़ता है, by 0.4 marks. ठीक है, in my second attempt I missed it by 2 marks and I realized exam day पे मेरा वो optimum number of questions set था, 2 marks means 1 question, एक क्वेश्चन का डिफरेंस पड़ रहा था। तो और वो इसलिए हुआ था कि लास्ट 10 to 15 मिनट्स में आई गॉट वेरी एंशियस, आई थॉट कि बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं, आई हैड सॉल्व्ड अराउंड 75, जबकि मेरा ऑप्टिमम जो है वो 85 के आसपास होता है, और उस चक्कर में मैंने 10 से 15 क्वेश्चंस वो 5-10 मिनट में कर दिए। सो व्हाट टर्न्ड इट मतलब रॉन्ग फॉर मी वाज दोस, मतलब वो लास्ट का जो 10-15 मिनट था उसने मेरा पेपर खराब किया है, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई could not get, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन का गैप पड़ रहा था। तो डोंट बी एंशियस एट ऑल, हमेशा ये एटीट्यूड रखिए एग्जाम से पहले कि ठीक है देखा जाएगा जो भी, इट इज जस्ट एन एग्जाम एंड आई नो इट इज वेरी इजी टू से इट वंस यू आर ऑन द अदर साइड, बट आई एम मीनिंग इट, डू नॉट मेक इट मोर देन एन एग्जाम। मतलब कई बार लोग उसके लिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स पे चले जाते हैं, डोंट डू दैट। एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी एंजाइटी बहुत नॉर्मल है, थोड़ा वॉक कर लीजिए अगर आपको लग रहा है, एग्जाम वाले दिन भी रीच द सेंटर ऑन टाइम, वॉक फॉर 15-20 मिनट्स, ठीक है, एंड ऑलवेज कीप दिस एटीट्यूड, रिमाइंड योरसेल्फ इट इज जस्ट एन एग्जाम, ठीक है, नहीं होगा देखा जाएगा, हमेशा ये एटीट्यूड आप अपने पास में रखिएगा। तो इन माय थर्ड अटेम्प्ट आई वाज वेरी चिल अबाउट इट कि ठीक है जो भी होगा देखेंगे, स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज वेरी रिलैक्स्ड मेरे प्रीलिम्स के पेपर के टाइम पे, एंड मैं जब मैं निकली भी थी तो भी रिलैक्स थी कि कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा देखा जाएगा। तो हमेशा इसी तरीके से रखिएगा एग्जाम डे पे। सीसैट टेस्ट सीरीज मैंने बताया, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं, लग रहा है तो आप एक कोर्स कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू शाई फ्रॉम इट, आप ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। डेडिकेटेड मेंस प्रिपरेशन, इसमें हाँ, इसमें आप सबसे पहले मेंस का जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स इज डेडिकेटेड 2 से 3 महीने का प्रिपरेशन जो प्रीलिम्स के पहले ही होता है। मेंस हमेशा आप स्टार्टिंग में ही कर दीजिए, मतलब आपका जैसे आपका एनसीईआरटीज खत्म हो रहा है, एज सून एज यू आर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटीज एंड न्यूज़पेपर रीडिंग आपका साइमल्टेनियसली, स्टार्ट विद योर मेंस प्रिपरेशन बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स इन द फाइनल। प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज, मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद उसमें आपने कट ऑफ से 10 मार्क्स ज्यादा निकाले हैं, 20 मार्क्स ज्यादा निकाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंस इज वेयर योर एफर्ट विल गो, कि आपको कौन सा सर्विस मिलता है, आपको प्रायोरिटी का सर्विस मिलता है नहीं मिलता है, वेदर यू वुड मेक इट टू द लिस्ट और नॉट। तो मेंस में आप अपना प्रिपरेशन पूरा सॉलिड रखिए, फुल प्रूफ रखिए। इसमें जीएस में जो भी हमारा सिलेबस है वर्ड टू वर्ड, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है ना, चारों को एकदम वर्ड टू वर्ड आप देखिए एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट, मतलब वो आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब वो क्यों हेल्पफुल है, नॉट जस्ट इन सॉल्विंग पेपर्स बट ये होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जैसे गवर्नेंस में कोई एक टॉपिक है, ठीक है, जो मेंशन्ड है सिलेबस में, and when you're reading the newspaper you come across कि this is directly given in the syllabus, ये directly syllabus का part है और ये आया हुआ है न्यूज़पेपर में, I can quote this as an example, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस चीज के लिए मेंस के क्वेश्चंस के लिए तो है ही, बट सॉर्टिंग करंट अफेयर्स एवरी डे, उस चीज के लिए सिलेबस को
वर्ड टू वर्ड आपको याद करना है, याद ही करना है, देयर इज नो अदर वे आउट। सिलेबस को अच्छे से आपको देख लेना है ताकि उसमें कोई इशू ही ना आए, एंड वंस यू आर डूइंग इट फॉर अ मंथ और सो, वो अपने आप हो भी जाएगा, सिंस इट इज रिविजन और कुछ नहीं है, इट इज रिविजन, यू आर रिवाइजिंग इट। तो डेडिकेटेड मीन्स प्रेप के लिए अगेन सेकेंड चीज आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है, एंड अनलाइक प्रीलिम्स व्हिच इज स्लाइटली अनप्रेडिक्टेबल, मेंस का ट्रेंड इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल कि किस तरीके से क्या क्या कौन से पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस का क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से देखना है। रिविजन ऑफ बुक लिस्ट, मेंस आंसर राइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेंस इज आंसर राइटिंग। आप यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट एन आंसर टू अ क्वेश्चन, मतलब वो कभी नहीं होगा इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इट। तो जैसे प्रीलिम्स में भी होता है कि आप बहुत एंशियस हो जाते हैं, मेंस में भी ये होता है दैट यू नेवर फील कॉन्फिडेंट इनफ। एनीबडी हु स्कोर्स वेरी वेल आल्सो, if you look at their videos, you would realize this, that you would realize this that they were also never confident कि हमने 3 महीने 6 महीने या 1 साल का प्रिपरेशन कर लिया है, but they are not feeling confident enough to write answers, but you have to do it anyway because आपको मेंस में टाइम इशू भी होता है, you have to feel confident कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सही है। तो 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है और वो लगभग कुछ 4000 वर्ड्स के आसपास होता है, एंड दिस इज वन पेपर, यू हैव 2 सच पेपर्स इन वन डे। अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा वो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे पेपर, एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर यू हैव वन हाफ द बैटल, मतलब यू जस्ट हैव टू कंप्लीट दोस मेनी वर्ड्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी इररिलेवेंट लिख दिया, वो नहीं चलेगा, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट जो भी है। आप बहुत सिंपली उसको आंसर कीजिए इन द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में आप अपना आंसर कीजिए, एंड डोंट राइट इररिलेवेंट या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कई बार हम ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज यूजुअली डन, मतलब ये गलतियां यूजुअली नॉर्मली होती हैं स्टार्टिंग में, इसी की वजह से हम डिस्कसिंग इट कि कई बार ये होता है कि जो पूछा गया है हमको उसके आसपास का भी कुछ कुछ पता होता है, हम सोचते हैं कि उसको भी लिख देते हैं, लेकिन ओनली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन वो ही आपको आंसर करना है, एंड बी वेरी सिंपल। मतलब मेंस के लिए सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आप बहुत सिंपली जो एक फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसी में आप लिखिए विथ सिंपल वर्ड्स, यू डू नॉट हैव टू राइट फैंसी वर्ड्स। आपको कोई मीडियम का टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट व्हाटएवर यू नो इन अ वेरी लूसिड सिंपल लैंग्वेज एंड फॉलो दैट फॉर्मेट। कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ अगर आपके पास में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई मैप हो गया या फिर फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू योर मेंस आंसर, इट विल गिव यू एन एज। मतलब नॉट मतलब ये नहीं है कि आप कोई फ्लावरिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, दैट विल हैव एन इंप्रेशन। एनीथिंग दैट यू ऐड व्हिच इज स्टैटिस्टिक एग्जांपल, या फिर यू हैव अ सॉलिड बैकिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। जैसे आप कोई एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम है ना, तो कम है तो उसको बैक कीजिए कि हमको ILO से या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से ये डेटा आया हुआ है या ये स्टैटिस्टिक है, दिस इज द बैकिंग दैट यू आर गिविंग। तो उस फॉर्म का कोई बैकिंग उसमें होना चाहिए, दैट गिव्स यू एन एज। तो मीन्स आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगेन देयर आर 2 साइड्स, एक IS बाबा एंड एक इनसाइट्स इंडिया, लाइक आई टोल्ड अर्लियर। इसमें अगेन देयर इज फ्री आंसर राइटिंग दैट हैपेंस। वो रोज 5 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, उसमें आप आंसर्स लिखिए। इनिशियली जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, डोंट लुक एट द टाइम लिमिट, जितना भी आपको टाइम लग रहा है आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन के लिए आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेक 15 मिनट्स फॉर वन आंसर, जो आपको एग्जाम हॉल में 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है, मैं इनिशियली 15 मिनट्स लेती थी, एंड दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी। तो यू विल आल्सो टेक दैट मच टाइम। तो इनिशियली डोंट फोकस ऑन टाइमिंग, जस्ट फोकस दैट यू हैव टू राइट आंसर्स। मतलब अभी मुझे सिर्फ आंसर्स लिखना है, क्या क्वालिटी है, कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में मत सोचिए। पोस्ट इट ऑनलाइन,
Not every day that you post your answer, it will be reviewed by the website, but peer review होता है. तो बहुत सारे लोग अपने आंसर्स उसमें पोस्ट करते हैं, तो यू गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ कि उसी क्वेश्चन को हमने कैसे आंसर किया और उसी क्वेश्चन को किसी और ने कैसे आंसर किया है. उसमें जो जो पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी सॉलिड बेस फॉर आंसर राइटिंग. मतलब लुकिंग एट व्हाट अदर्स आर राइटिंग एंड कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज आप 1 महीने से लिख रहे हैं, हो सकता है सामने वाला 1 साल से लिख रहा हो, ठीक है, 1 साल से उसको प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उनका जो आंसर है वो बहुत रिफाइंड होगा. इट विल हैव एग्जाम्पल्स और स्टेटिस्टिक्स विच आर स्पॉट ऑन. तो वो चीज आप उससे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब आप 1-1.5 साल जैसे भी है आपको आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स उसमें मिक्स करना है, इंटरनेट यूसेज होगा, पैटर्न आई हैव डिस्कस्ड, एंड टाइमली कंप्लीशन. वंस यू मूव फ्रॉम आंसर राइटिंग, मतलब एक दिन में आप 1 या 2 आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत ग्रेजुअली वो शिफ्ट आ जाएगा कि आप एक दिन में 20 आंसर्स भी 3 घंटे में लिख लेंगे. इट विल हैपन वेरी वेरी नॉर्मली, वेरी ऑर्गेनिकली. कोई उसमें फोर्स मैकेनिज्म नहीं है, वो बहुत ऑर्गेनिकली वो इट विल फॉल इनटू प्लेस. ऑप्शनल, लाइक आई टोल्ड यू, चूज योर ऑप्शनल वाइजली एंड नाइसली. सिलेबस आप देख लीजिए वर्ड बाय वर्ड एंड ऑनलाइन नोट्स बना लीजिए एंड अपडेट इट. Now I am not discussing much about what I did with my option, because there are 20 to 25 options in total, and I'm sure not everybody would want to choose anthropology as their optional subject. तो मैं सिर्फ बहुत जनरल जो मैं बता सकती हूँ ऑप्शनल के बारे में वही बताऊंगी कि आप देख लीजिए आपके मीडियम में उस पर्टिकुलर ऑप्शनल का मटेरियल जो है, कोचिंग मटेरियल, वो इजीली मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, whether you are able to give, whether you are inclined towards it or not, whether you are able to give 6 to 8 hours for the preparation of option or not. वो second चीज है. तीसरा, be practical also. ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री ले लिया है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपने हिस्ट्री ले लिया और उसका सिलेबस ऐसा है कि कंप्लीट ही नहीं हो रहा है. तो बी वेरी वाइज व्हेन यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. आई कैन नॉट एम्फसाइज अबाउट इट इनफ. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. And fourth is note making. Note making is the most important thing. क्योंकि optional, as I told you, it is in itself 500 marks का है. जितना GS है उतना ही optional subject है जो 2 papers में आ रहा है. तो जब when you are going for giving the examination, है ना, you will not have much time कि आप वो सारे के सारे, अगर आप 12 बुक्स आपका बुक लिस्ट है ऑप्शन का, तो अब वो सारा देख पाएंगे. तो आपका नोट्स इतना कंसाइज होना चाहिए कि आप 1 day before the exam, if you are revising it, you are able to revise the entire subject. And उसमें टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, है ना. if you have to invest in something, it is टेस्ट सीरीज for the entire preparation. मतलब अगर आपको कोचिंग नहीं लेना है, मटेरियल है, मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा. ओके सिमरन, आई नोटेड योर क्वेश्चन. ठीक है, आपको मटेरियल मिल जाएगा. और ऑप्शनल आपको इस तरीके से देखना है कि मतलब यू आर रेडी फॉर इट, है ना. जैसा भी होगा ऑप्शनल आपको इस तरीके से चूज करना है. दैट यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, आप उसको चूज कर सकते हैं. आपके मीडियम में उसका जो है काफी सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप चूज कीजिएगा. बाकी इट्स जस्ट जनरल गाइडेंस. if you choose your optional and you have any doubt about it, you may contact. तो फिर हम उसके बारे में आगे भी बात कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजी का प्रिपरेशन के बारे में. इफ एनी वन ऑफ यू डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन इफ वी स्ट्रक्चर मींस, तो यू विल आल्सो बी सॉर्टेड. तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है. जस्ट हैव टू गिव इन वॉक इन इंटरव्यूज, कुछ मॉक इंटरव्यूज देने हैं एंड उसको एनालाइज करना है. आपको जो वहाँ पे बोर्ड होगा वही बता देंगे आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. उस पर वर्क कीजिए. 5 से 6 मॉक इंटरव्यूज दीजिए. कई बार लोग 10 इंटरव्यूज तक देते हैं. एज इट सूट्स यू, गिव दोज मेनी नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज, बट ट्राई एंड इंश्योर कि आप कुछ तो दे ही दें. मतलब 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज तो अपने डेट से पहले दे ही दें. Yeah, so this was all from my side. I am sure I must be missing out on something, but
This is all that I had to share on my end. मैंने कुछ अपने personal experiences भी share किए थे. If there's something that I'm missing out on, please let me know. I'll be glad. Thank you so much, Shipra ma'am. There are few questions from the students and participants who have joined us online on Google Meet as well as on YouTube Live. I will take one by one their questions, if you allow. Yes. So the first question is that how did you stay consistent during your preparation? And which newspaper would you recommend for preparation? For the newspaper, as I had mentioned, either of the two newspapers, आप कोई भी newspaper पढ़ सकते हैं वैसे, but these two newspapers are usually recommended and they also have good editorial analysis. So you can read either the Hindu or the Indian Express, either of the two. Any one would suffice. Second is about consistency. Consistency, we try to be consistent. Starting में motivation इतना होता है that you try and you are able to give in those many number of hours. But बीच में ये होगा कि motivation fall भी करता है. At that time, discipline is something that will help you. And I used to tell to myself कि the pain of regret is always difficult. मतलब you imagine yourself not getting where you are. That regret just because of कि मुझे अभी मेहनत नहीं करनी है या फिर मुझे अभी नहीं पढ़ना है. There could be n number of circumstances. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें luck भी एक factor है, but that is not in your hands. But there is something which is in your hands, ठीक है, which is discipline. तो आप disciplined रहिए और ये सोचिए कि if you are not getting where you envision yourself to be, उसका एक pain होगा of regret. How would that feel? I think that would somehow on most days वो आपको discipline रख सकता है या फिर consistent बनवा देता है. And it is also very important to take breaks. अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है अभी, तो give it some time and rest. आप रेस्ट कीजिए या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है करना, your hobbies or whatever, or just completely rest, वो भी आप कर सकते हैं. That will also help you in building that momentum. When you get back, so you get back with consistency. Yes, ma'am. And there is one more question. How should we manage failure during the preparation? देखिए, जैसे मैंने बताया, first two prelims I had also not gotten through with my first stage of, मतलब जो first stage होता है, तो कई बार ऐसा लगता था कि अगर पहला ही स्टेज के लिए तीसरा अटेम्प्ट जा रहा है, मेंस और इंटरव्यू पहुंचने तक कितना होगा. तो इसको आप ज्यादा, लेकिन ये भी हो जाता है कि यू थिंक मच अबाउट द रिजल्ट रादर देन गोइंग विद द प्रोसेस. तो वो मत कीजिए. जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी सिर्फ किसी की वजह से हो जा रही है, तो फिर आप मेंटली अपने आप को ये रिमाइंड करते रहिए कि इट इज जस्ट एन एग्जाम, नहीं होगा तो हम कुछ और कर लेंगे लाइफ में. दिस इज हाउ आई थिंक वन शुड हैंडल इट. Yes, ma'am. There are few questions from the YouTube live participant. That, ma'am, how long did it take you to complete the entire syllabus? और कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, आप एनसीईआरटीज जब करते हैं स्टार्टिंग में, तो 2 से 3 महीने उसमें लगने चाहिए. और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, दैट शुड नॉट टेक मोर देन 6 to 7 months. तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगी कि वेरी कंफर्टेबली 1 year इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल is sufficient for completing your syllabus. मतलब I'm not talking about revision, लेकिन complete करने के लिए 1 साल काफी होता है. Yes, ma'am. There is one more question from by the YouTube live participant Raj. Ma'am, I'm preparing for my second attempt on 24th of May, and I have covered most of the syllabus. However, my mock test scores are low, and my first attempt also scored low in GS and CSAT. So, could you please guide me how to improve my accuracy and performance? इट इज ऑल राइट. ठीक है, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मार्क्स कम आए हैं, उसको एनालाइज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इवन इफ यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट, आपको उतना ट्रांसलेट नहीं हो रहा है.
और जैसे मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि कितना ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्कोरिंग आपको लाना है। कई बार क्या होता है कि आप नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस भी आप बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो किस किस चीज की वजह से स्कोर जो है वो कम हो रहा है? नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कम है, या फिर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, या फिर कुछ एक या दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको मार्क्स जो है उतना नहीं आ पा रहा है जितना आप एफर्ट दे रहे हैं उस चीज में। तो एनालाइज दैट फॉर योरसेल्फ एंड क्यूरेट इट इन दैट मैनर। मतलब जो आपका प्रिपरेशन है आगे का, उस हिसाब से आप क्यूरेट कीजिए। एंड डोंट फील डिमोटिवेटेड जो आपको मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। वो होता है वो सभी के साथ में, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो कुछ टेस्ट में यू स्कोर वेरी गुड, कुछ टेस्ट में आप ऐसे स्कोर करते हैं जिसमें आपको लगता है कि बता ही नहीं पाएंगे किसी को। तो वो होता है, इट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। बात रही प्रीवियस अटेम्प्ट की, उसमें आप अपना एनालाइज कीजिए कि किस किस चीजों में आप जो है आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या फिर करेक्शन की आवश्यकता है, और वहां पे आप उसमें एफर्ट दीजिए। Yes, thank you so much, ma'am. And through here, I would like to take opportunity that our honorable Vice Principal, ma'am, have joined us throughout the session, and she is listening to us. I would like to invite honorable Vice Principal, ma'am, Dr. Prajakta Paranspe, to say a few words to our listeners. Hello, I think I'm audible. Yes, ma'am, you're audible. Yeah, first of all, very warm welcome to Shipra. As the alumni of our institution, it is very proud moment for us that you are joined here and guided the students regarding these administrative services. Actually, students are not much aware about how to proceed, and when I listen to you, you have guided them right from the scratch. It means just to think about the decision making, to do the needful, as well as how to progress themselves and try to achieve whatever they are looking forward. So thank you so much for joining us and guiding our students. As a part of our family, we are very grateful to you. And thanks to the Department of Zoology and IQSC for conducting such a good talk, which will inspire our students where we are basically lacking in this particular field. So thank you so much to all of you, and all the very best for your future endeavors. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite even the head of the department of the zoology and IQSC co-coordinator, Dr. Anushka Kini madam, to say a few words to our participants. Okay, due to network issues, ma'am could, uh, could not say few words. Now I would move forward further with our event. Now, uh, thank you so much, ma'am, for your enlightening and motivating session. And your journey, strategies, and experience have truly inspired us a lot. Now, I would like to invite Dr. Sonal Dange, ma'am, the Assistant Professor of Department of Zoology, to deliver the vote of thanks. Sonal, you aren't audible.
Good morning, everyone. Myself, Dr. Sonal Ramesh Kande from the Department of Zoology. Firstly, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed speaker and my dear student, Ms. Shipra Chaudhary, for sharing her valuable insights and inspiring journey with us. Your session was highly informative and motivating. We truly appreciate the time and efforts you took to connect with our students and guide them. I extend heartfelt thanks to our respected principal ma'am, Dr. Deepa Verma ma'am, Vice Principal Dr. Paranspe ma'am, IQSC Coordinator and Exam Chairperson Dr. Rohan Gavankar sir, IQSC Coordinator Dr. Anushri Kini ma'am, and Head of the Zoology Department Dr. Smita Subramaniam, and Management and Viva College Trust for their constant support and encouragement. I also thanks all the faculty members and students for their active participation in today's session. Lastly, I appreciate the efforts of the organizing team for making this event successful. Thank you, everyone. Yes, thank you everyone for your active participation. We hope this session inspired you to aim higher and work towards your goal with the determination. Uh, Yes, now Smita ma'am would like to say a few words. On behalf of Department of Zoology and Viva College, I would like to extend my heartfelt gratitude to Shikra Chaudhary. The session was very good, very enlightening. And there were many questions which were answered. There are, I guess, today many questions answered by Shipra. It will help them and guide them to prepare well and definitely crack their exams. So on this onset, I'm really grateful that Shipra, in your busy schedule, you could squeeze in this time and you could conduct this session. So that was really kind of you to do that. This gesture will always remain with us and the college. So I hope your association will continue with us for the years to come. And we will keep on meeting again and again if possible. Of course, with your busy schedule, we will not try to disturb you much, but then your expertise will always help to guide our students like you did today, probably in future as well. And I would also like to thank Shweta Sahashne and Dr. Sonal Dange, who were the convener of these along with this, a very huge support by Avinash Sonavane sir from IT department, who helped us in the technicalities and things like YouTube Live. So a big thank you to them. And of course, Principal Ma'am, Dr. Deepa Verma Ma'am, Vice Principal Ma'am, Dr. Prajakta Faranspe Ma'am, then IQSC Coordinator, Dr. Rohan Gavankar, and our beloved co-coordinator, IQSC co-coordinator, Dr. Anushri Kini, who happens to be our head as well. So thanks to all the faculty members and students who participated, and above all the trust and Viva College, who always support us to conduct such sessions. We have constant support from the management and the trust. So big thank you to them as well. So on that note, I guess we would be concluding today's program. So it's been a great event. Thank you once again. And thank you, dear Shipra. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It was my pleasure. Thank you.